Hello, welcome to the class third English, and our ninth chapter is the message of the sunflower. क्या है? Message of the sunflower. Once upon a time, the earth was far more beautiful than it is today. The water was pure and deep. The land was green with various kind of grass, trees, and plants. तो देखो वहाँ पे एक सनफ्लावर को थोड़ा कहानी की चीज आपको बताना चाहता हूँ। क्या कहानी है? Once upon a time, बहुत पहले, it was far more beautiful than it's today. अभी से बहुत बहुत सुंदर है. The water was pure and deep. बहुत अच्छा प्योर वाटर मिलते थे, शुद्ध पानी मिलते थे. Land was green with various kind of grass, trees and plants. क्या है थे? ओके, द ग्रीन कलर में हरा हरा लगते थे, अलग अलग तरीके से पौधा, पेड़, जैसे घास जैसे थे. दिस गेव फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स, एनिमल्स एंड मैनकाइंड. मतलब ये चीज़, ये नेचर अलग अलग चीज़ों को क्या देते थे? शेल्टर, खाना देते थे. At night, clean and cool air blew and all the creatures slept peacefully. रात को बहुत शुद्ध और ठंडा हवा आते थे. उसमें पूरा के पूरा सृष्टि क्या करते थे? सोते थे आराम से. People on earth lived close to nature. They honored it and never took more than what they needed from it. ओके, उस लोग क्या करते थे? अभी उनको जो जरूरी थे वो जमीन से लेते थे. Slowly they proposed and began to build many nations throughout the world. इसके बाद में अलग अलग देश, राज्य बनाने चालू किया था. Then one day, terrible thing happened. A strange spirit of greed entered of the head of the mankind. The people began to be jealous of one another. They were not satisfied with what they had. एक दूसरे को जैसे झगड़ा करने के लिए चालू किया था. We want more toys, said the children. We want better jobs, said the man. We want new clothes, said the woman. तो जब भी है इंसान का जो इंसान का जो डिमांड से कम नहीं होगा. ठीक है. Nations wanted more of everything, land, water and rescues. They procured minerals from air to build lethal weapons. To defend their nations from other ambitions. They began to kill other peoples. Okay? They pull out the air and other water. Nature began to die. देखो सब कुछ खराब करने लगे. कौन? इंसान. सब कुछ खराब करने लगे. The birds and animals, plants were unhappy. They had a meeting to discuss the matter. अगर जानवरों, पक्षियों और प्लांट्स क्या किया है कि एक मीटिंग बुलाया था. They had to something stop this greed. ये तो खराब करने वाला ये काम को मना करने के लिए, कुछ करने के लिए कोशिश की. They said to one another, but how will we do that? कैसे कर सकते? We cannot speak the human language and humans do not understand our language. हमारा भाषा उनको समझ में नहीं आएगा, हमको जैसे बोलना भी नहीं आते. The birds and the animals looked towards the little sunflower. The wise butterfly said, we should find a symbol of peace or brilliance, that all who see it stop act of
destruction and remember that the peace and beautiful. सनफ्लावर वहाँ पे देख के जिसे ये बोला बटरफ्लाई बोला कि हम लोग ये सिंबल बनाते हैं पीस का, क्योंकि इसके देख के कोई तो इसे याद है. All the birds and animals or plants turned into the sunflower. Will you do this for us, little sunflower? They asked. Yes, I am. Tall and bright. मैं आप लोगों के लिए करेगा. My yellow peels can tan plain cloth and gold. My seeds used for living being. Yes, I can be your symbol of contentment and peace. मेरे को ये आपको मदद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. All the living creatures rejoiced. It was decided that each man would take one sunflower seed, fly over every nation and where plants seed the earth. The bird did so. In no time the seeds took root and grew, and the sunflowers were multiplied. Whenever sunflowers do, they seemed to be a special golden glow of the air, and people could not ignore such a magical sight. लोग को जैसे भूल नहीं. Soon they began to understand the message of sunflower. We will not wage wars. देखिए सनफ्लावर्स को मैसेज सबको पता चला है. देखिए बहुत बड़ा युद्ध बनाना नहीं. We will destroy all our lethal weapons and put an end on war. The people chose the sunflower as a symbol of peace. All the plants and the animals were happy. The golden sunflower stood all with their faces turned eastward, rising sun and following the sun until its setting was. They gave their goodness to the world. Everyone who sees the sunflower today will know that the golden light to peace is beautiful. ये है हमारा कहानी. ठीक है. सनफ्लावर्स आर द सिंबल ऑफ अ वर्ल्ड फ्री और लेदर वेपन. सनफ्लावर आप लोगों को एक कहानी दे रहे हो. ठीक है. क्या है कि आपको पीस में रहना है, शांति से रहना है, एक दूसरे को लड़ाई करना नहीं है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.